Hello bachcho, I'm Abhishek. Today we are discussing the new chapter in the series of Re-Neet examination 2026. So in today's topic, I am discussing a chapter that is semiconductor. In this chapter, in last examination, this chapter contribute minimum 3 to 4 question in 2026 NEET examinations. So this chapter is also very important in the case of Re-Neet examinations. So in this chapter, first of all, we are discussing about the important concepts along with the previous year question. So I am in this topic, I am discussing about the both amalgamation of the concept and previous year question. So let's see the first question here. Okay, so first of all, I am talking about the first question. The first question says that in the case of given circuit, so what is the current in the below circuit? In this case, they are asking to you current. So how we can find the current in the given circuit? So first of all, I am discussing about the forward and reverse bias, because see here the diode are connected in the circuit are in forward and reverse bias also. So in the case of forward bias, the current is flowing in the case of forward bias, means the diode is the unidirectional we can say the device. So diode is only conduct current in the case of forward bias, but in the case of reverse bias, this is reverse bias condition, because this N is connected with the positive terminal and P is connected with the negative terminal. So reverse bias, so there is no current. Okay, these are the property of diode. Okay, and there is a P is connected with the positive terminal, N is connected with the negative terminal. So this is forward bias. So in this case, the current is flowing in the circuit, right? So whenever I am talking about the basic concept of this reverse and forward bias, so I am talking about here. See here, in the case of forward bias condition, on states, this is the on condition. On means the diode is working on, and this is off condition. OFF off means the diode is not working condition. So in the case of forward bias, when the anode is connected with positive and cathode is connected with the negative terminal, when this is positive, this is negative, then the conduction of current is possible here. So in this case, we can say that resistance of the diode is 0 in the case of first condition and the forward bias condition, and the current is flowing here is maximum, where the voltage drop is approximately 0 in the case of circuit. So this is behave as a short circuit, means the current is flowing in the case of forward bias condition, in the case of forward bias. But in the case of reverse bias, just opposite to this, the resistance is infinity, right? That is a zero flow, or we can say that the current is not flowing in this case. This side the current is not flowing, means this is behave as an open circuit. So when this is behave as an open circuit, then what is the outcome of that circuit? How we are getting the current from that circuit? Okay, so first of all, I am talking about this circuit. Whenever you're talking about this circuit, this is suppose the current I is going from here. See this current I is going from here. So in this side, suppose I1 current flowing, this side I2 current flowing, this side I3 current flowing, and this side I4 current flowing. So this first circuit is in reverse bias, right? So the current is not flowing here. Second is forward bias, current is flowing. Third is also reverse, that is not flowing current. In this part, current is also flowing. So I am making a new circuit here. So whenever you making a new circuit, then you can say that these are the circuit, right? Okay, this is a 10 volt plus or minus. Okay, and diode D1 is given to you. The first circuit is 2 ohm. Okay, and the current is I2 here, right? And the second current we are talking about, that is I4, and that will be how much? That is diode D1, and this is a 4 ohm. So in the case of forward bias direction, this is behavior is short circuited. So current, this is simply, we can say that, replaced with the normal wire. So these two resistance are in parallel. So first of all, I am finding the R total to finding the current here. So R is 4 into 2 by 4 plus 2, that is 8 by 6. So we can say that 4 by 3 ohm, right? So what is the current here? That is V by R. So we can say that we can say that 10 upon 4 by 3, that is 30 by 4. So we can say that 15 by 2 ampere is the correct answer. So according to this, we can say that option number D is the correct option of this given question, right? Now we are going towards next question. So next question again the question is asking in 2026 NEET examinations. So in this case, we can say that in the given circuit, what are the diode and what are the graph of the given circuit? So actually this type of problem are from the rectifier, and this circuit is belong to half wave rectifier. So first of all, we discuss we can say that the concept of rectifier here. So okay, so first of all, I am talking about rectifier. So rectifier is a device which convert AC signal into DC signal. These are the main objective of rectifier, okay, and which follow only one direction, means
it is the single direction device, we can say that. Okay, suppose we are talking about AC to DC, means this is the AC supply voltage, input voltage, and this is the DC voltage. The graph of this is given to you, right? So we are talking about half wave and full wave condition here. So first of all, see this, the half wave condition means, the first of all we are talking about half wave rectifier. Half wave rectifier. Okay, so in the case of half wave rectifier, first of all the circuit is look like this. This is the AC supply given to the circuit, current I is flowing, and one transformer is connected here, that is step down transformer. Okay, and one diode is connected with this, and these are the load resistance RL. Getting to all of you? Okay, this is the diode. Okay, so these are the transformer and diode is given to you. So whenever the AC supply is given to you, so first of all what you are doing here, the AC supply means the input is V input is AC, right? We are talking about V input versus time graph. Okay, and here is V output versus time graph. Okay, so whenever I am talking about the condition of AC, means for one cycle we can say that this is the positive and negative pulse. Whenever you give positive pulse to the circuit, then the diode will be working as forward bias. This case the diode is forward bias, this is negative, so this conducts the current, but this is negative side. Whenever second time you give positive to this and negative to this pulse, then diode is behave as a reverse bias. So in this case there is no conduction of current is possible. Again diode is working as forward, reverse. This is the forward bias, this is the reverse bias. Forward bias and reverse bias. So in the first case, in the whole cycle, the first part, first positive half, the diode is working as a forward bias. In the second negative half, it does not conduct any current. So we can say that this type of rectifier is called half wave rectifier. Means for a full cycle, it work only for half cycle of the wave. So we can say that it is a forward bias rectifier, half wave rectifier. Okay. Now, in the case of, we can say that same question, we can say that full wave rectifier. So in this case we are putting two diode, so in this case total pulse we are getting. So in the case of full wave rectifier, we are talking about full wave rectifier में बच्चे क्या होता है, हम दो डायोड यूज करते हैं यहाँ पे. ओके, we are using two diode. Okay, in this diode the RL is connected here. Okay, so whenever in the first case, in the case of full wave rectifier, what happened here, I am talking about whenever you give first positive pulse to this and negative pulse to this. So suppose diode D1 is this one, D2 is this one. So in this case diode D1 has work as a forward bias and D2 as a reverse bias, right? Whenever you give positive to this and negative pulse to this, then this D2 is working as a forward and D1 as a reverse. Then again this is D2, D1, again D2, right? So like this way we can say that at a time D1 is working, at a time D2 is working, at a time D1 is working, D2 is working. So by this way we are getting the full wave rectifier. Okay, so whenever we discuss the question here, so in the case of this, the first part, the diode, this is the AC voltage is given to you. So first of all you are getting this value. For negative half there is no supply will given to you, so the output voltage will be option number D. So D option is correct option for this question. Okay, this is load resistance. Clear to all of you? Now we are going towards next part. Now see this is the statement is given to you. Again this question asked in 2026. So already I am saying to you, this chapter contribute minimum 3 to 4 question, and it is highly possible that in Re-Neet exam also 2 to 3 question are there, and the concept are similar to all the questions. So if you revise this theory part, or the we can say that question, then definitely you are getting the very good marks in the Re-Neet examinations. So in the case of this, we can say that two statement is given to us. So they say that whenever the forward bias voltage across the PN junction, then the diode increases at a certain threshold voltage and the diode current will increase rapidly. Very good, Bachche. This is very important concept. What happens? They say that if the diode is given to you, means the P is connected with the positive and this is negative, when this is forward bias condition. Okay, and this is the reverse bias. Already we discussed about this. This is reverse bias condition, this is positive, this is negative. So in the case of forward bias diode, whenever the diode is in given forward bias, so after certain time the diode current will be increasing, right? And this voltage is called knee voltage, और वी कैन से दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑल्सो. तो देखो आप इस पॉइंट के बाद ना बच्चे, ये सिलिकॉन के लिए होता है बच्चे 0.7 वोल्ट
एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, राइट। सो अगर सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट हो रहा है, जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट हो रहा है बच्चे, तो इस वोल्टेज के बाद आफ्टर दिस वोल्टेज वी कैन से दैट द the current will be rapidly increases, so say that the current will be increases significantly, that will be 100% current. And in the case of reverse bias, it is they say that the current is called the reverse saturation current. No, ये reverse current नहीं है बच्चे, ये forward direction का current है, okay, and reverse direction का current इधर है, okay. So ये दूसरा वाला second वाला wrong है, तो we can say that which option is correct for this question. So for this question we can say that the option number that is B is correct है. Why? Because statement 1 is true, statement 2 is false, right? वो statement ये wrong है बच्चे, ये भी wrong है, दोनों गलत नहीं है, ये भी wrong है, ठीक है. So now when we are talking about the concept of graph, then we can say that this one. Now this is the CRO. ये CRO है बच्चे, है ना, ये लैब में मोस्टली यूज करते हैं, इंजीनियरिंग लैब में. सो बाय द हेल्प ऑफ CRO ओनली वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ. देखो सर्किट को हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, असेंबल करते हैं. आफ्टर असेंबलिंग सर्किट वी आर कनेक्टेड विद द लैपटॉप, एंड देन आफ्टर वी आर कनेक्टेड विद CRO, एंड देन वी सी द we can say that's circuit diagram of any electrical circuit. So these are the CRO, just for your basic knowledge I am showing you here. Now in the case of VI characteristics, this is the diode, okay. So diode में देखो इधर राइट की साइड की तरफ देखो फॉरवर्ड बायस करंट है, ठीक है. इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, जो यहाँ पे कनेक्टेड हो, ठीक है. फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट है, फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट है, राइट. एंड पीछे की तरफ क्या है बच्चे, पीछे की तरफ लीकेज करंट वी कैन से दैट, और इसको G0 ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको, और ये लीकेज करंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज लीकेज करंट, दिस पार्ट, ओके. अंडरस्टूड. सो ये आपका ग्राफ है, जस्ट यू नो द बेसिक आइडिया अबाउट ग्राफ. ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी अ टाइम क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम दिस ग्राफ, राइट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चन, द डिफरेंट क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द गिवन एंड कंडीशन इन दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वोल्टेज इज गिवन टू यू, एंड दिस इज नथिंग बट अ फुल वेव रेक्टिफायर. अब देखो अभी जो मैंने सर्किट बताया आपको, वही रेक्टिफायर का सर्किट है, दो डायोड यहाँ पे यूज किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे से दैट इन द ऑप्शन दैट कि दोनों में से कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है, क्या है, वी कैन चेक हियर, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल V इज गिवन टू यू. तो V इन इक्वल टू हाउ मच, दैट इज V0 साइन ओमेगा टी होता है बच्चे, जनरल फार्मूला, राइट. सो अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला V इन का वैल्यू कितना दिया आपको, 220, एंड साइन दैट इज 100 पाई इंटू टी, 220 साइन 100 पाई इंटू टी. सो ओमेगा का वैल्यू कितना बच्चे, 100 पाई. इफ ओमेगा इज 100 पाई, सो वी नो दैट 2 पाई एफ इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 100 पाई. सो पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 50. सो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चे, 50 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू दैट इज 1 बाई 50, वी कैन से दैट 0.02 सेकेंड. दिस इज योर टाइम पीरियड. whenever you are getting time period here, then we can say that what are the further thing means they say that what are the value at the t is equal to 15 सेकेंड. तो आपको पता है बच्चे एक वेव फॉर्म कितने का होता है, एक वेव फॉर्म इतने टाइम में जा रहा है. तो देखो t इज इक्वल टू 15 मीन्स हाउ मच, दैट इज 60/15, मतलब 15/60 कितना, 1/3 हो गया. तो अभी 3/4 टाइम आपने अब चल लिए, तो कितना होगा, 3/4 t यू आर यूजिंग हियर. सो टिल दिस पॉइंट यू आर एट दिस पॉइंट, ओके. आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज वी कैन से नेगेटिव. मीन्स यहाँ पे डायोड का सिग्नल क्या है बच्चे, नेगेटिव है. तो अगर डायोड D1 को आप नेगेटिव दोगे अभी, और डायोड D2 को पॉजिटिव दोगे, तो ये तो कैसा रिवर्स बायस में बिहेव करेगा, एंड दिस इज बिहेव एज अ फॉरवर्ड बायस. तो आप देखो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन द D1 इज फॉरवर्ड, नहीं ये तो गलत है बच्चे, बोथ आर रिवर्स, ये भी गलत है. D1 इज फॉरवर्ड, ये भी गलत है. डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिकॉज डायोड D2 इज रिवर्स बायस एंड डायोड D1 is reverse bias and D2 is forward bias. So you can say that option number D is correct according to given option, right? Now we are going to the next question. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले बच्चे we are talking about the basic digital circuit, right? हम एक डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे अभी पहले, ठीक है. Now what are the digital circuit I am talking about? Okay, see this. तो इस क्वेश्चन को करने के पहले डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे. देखो आपको पता है टाइप ऑफ गेट्स होते हैं बच्चे. गेट्स में बेसिक गेट्स होते हैं 3 गेट, टोटल 3 गेट्स आर बेसिक्स एंड दे आर डेराइव्ड गेट. मीन्स दिस बेसिक गेट विल बी डेराइव्ड दिस टाइप ऑफ गेट्स, राइट. तो एक बार हम सारे गेट्स को पढ़ेंगे, और गेट्स को पढ़ने के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज एंड गेट. एंड गेट, तो एंड गेट क्या होता है बच्चे, एंड गेट होता है, इसका ऑपरेशन होता है बच्चे y इज इक्वल टू दैट इज a डॉट b. दिस आर द ऑपरेशन ऑफ एंड गेट. सो एंड गेट सिंबल इज लुक लाइक दिस, okay. This is the input a b and y is equal to that is a dot b, okay. So we can say that what is the truth table of AND gate, that is a b, okay, and this is y, that is a dot b, okay. So in this case we can say that 0 0, this is the input, 0 1 1 0 1 1, because this is the digital circuit, so it is only working on the binary system, that is 0 or 1. So in the case of AND gate we can say that if any one of the value is 0, okay,
then the outcome becomes 0. So 0 0 0, this value is 1. So these are the AND gate symbol. So you have to learn these 2 points. One is the what are the diagram and what are the operation value, right? Second is we can talking about OR gate. So OR gate क्या होता है बच्चे, देखो OR gate y is equal to that is a plus b होता है ऑपरेशन, राइट. एंड OR gate का सिंबल बच्चे ऐसा होता है, थोड़ा सा ये इस टाइप का, ठीक है. ये ए बी है बच्चे, ये y is equal to क्या होगा, a plus b. So again we are talking about a b and y is equal to that is a plus b. इसको बात करेंगे बच्चे. तो 0 0 होगा, ये 0 1 होगा, 1 0 और ये 1 1 होगा, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चे, दैट इज 0 1 का जो इसमें क्या करना है, इफ एनी वन वैल्यू बिकम 1 तो ये वैल्यू 1 होगा. इफ एनी वन वैल्यू बिकम 1 देन दिस वैल्यू बिकम 1. तो दीज आर द OR गेट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट होता है बच्चे, दैट इज नॉट गेट. नॉट गेट इसको बोलते हैं इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं. इन्वर्टर मतलब ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है. मीन्स व्हाट हैपन, नॉट गेट इज रिप्रेजेंटेड लुक लाइक दिस. सो ये ए को क्या बनाएगा बच्चे, इसका इनवर्स ए बार. मीन्स इसमें अगर आप ऐसे बोलोगे, वेन एवर यू से दैट, है ना, दैट इज 0 का 1 बना देगा एंड 1 कन्वर्ट इनटू 0. दिस आर द बेसिक थिंग. नाउ वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट गेट, दैट इज द वी कैन से दैट another gate, then we can say that this is the first is that is NAND. NAND means that is NOT plus AND gate. Okay, so whenever AND gate में अगर आप NOT लगा दोगे तो NAND बनेगा बच्चे. और NAND कैसा बनता है देखो, like this way. This is NAND gate AB and truth table क्या होता है इसका, just opposite to the AND gate. Means NAND gate का truth table क्या होगा, y is equal to that is a dot b का बार, y is equal to that is a dot b का बार, right. So NAND gate का आउटपुट क्या आएगा बच्चे, that is output of NAND gate is y is equal to that is a b and y is equal to that is a dot b का बार. So it is just opposite to the AND gate. 0 0 0 1 1 0 1 1. So we can say that how much this value become 1 1 1 0. Okay, now next is we can say that OR gate, NOR gate. NOR means this is universal gate also. ये universal gate है बच्चे, ये और ये दोनों. NOR and NAND is a universal gate. Okay, so we can say that this become how much, that is y is equal to a plus b का whole bar, right. So we can say that that is a b and y is equal to a plus b का whole bar. We can say that that is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, so the output become how much, that is 1 0 0 0. and the diagram will be how much, that is OR gate. OR gate में अगर आप नॉट लगा दोगे बच्चे तो ये NOR gate हो जाएगा. दिस इज NOR gate. ओके, दैट इज y is equal to a plus b bar. So these are the basic structure of this. Now we are talking about the question. The given question say that this one. So ये क्या है बच्चे, ये NOR gate है. ओके, ये भी क्या है, ये NOR gate है. ओके, और ये क्या बच्चे, दैट इज AND gate. First of all the y is given to you. What is y1? y1 is equal to that is a plus b का बार, और ये NAND है, NAND. दिस इज NAND गेट. तो ये y2 कितना है बच्चे, दैट इज a डॉट b का बार, राइट. सो ये कितना होगा बताओ, y is equal to y1 plus y2. ओके, सो वी कैन से दैट इज a प्लस b का बार प्लस ऑफ a डॉट b का बार. सो वी कैन से दैट a प्लस b प्लस ऑफ a डॉट b का होल बार. So y is equal to we can say that that is a plus of, take b common, that is 1 plus a का whole bar. So we can say that y is equal to that is how much, a plus b का bar, and this is nothing but a, that is which gate, NOR gate. ये NOR gate का symbol है बच्चे, ठीक है. Now we are talking about next question. Now this is the graph. So this is the graph, that is LED is given to you, Zener diode given to you, photodiode, solar cell. So the option D is correct one of this graph, because option D is give the reverse direction, है ना, current, we can say that, because the solar panel is a inbuilt on the top anywhere. Okay, right. This is solar cell graph. Okay, so whenever you give the electric, that is sunlight to the solar panel, then only it is activated and it is used to charge the battery, right. So that's why the graph of solar cell in the reverse bias. Okay, these are the condition. Okay, now next question we are talking about that
Which of the following or gate and not gate, when you use both of the gate, then what are the value of we can say that output of this gate, right? So whenever I am making the nor or gate, this is or gate, right? I am making here, this is or gate plus not gate. Okay, so this is or plus not, so this will give you nor. Already we know about this. So nor gate means option number 2 is correct option of this, right? Now again, this question asks in Re-Neet examination, whenever this type of structure is given to you, so just whenever the first and the both input terminal is shorted, then this A is just inverse of this value and B is just inverse of B value, and this is how much, that is NAND gate. So the output of NAND is how much, that is A dot B ka whole bar. So this will give you how much, that is A plus B. Okay, so I am giving you some condition important, that is A double bar is equal to A, second is B double bar is equal to how much, B. Okay, C is, suppose if A dot B double bar, that is A plus B, and D is if A plus B dash dash dash, we can say that A dot B. Okay, so in this case, which of the following option is correct here? So we can say that the option number C is correct option, right? Now in this question, see that the logic gate is given to you, so we have to find the value where which of the following output is matched. This is the output. सो ऑप्शन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बेस्ट मेथड है, यू चेक द ऑप्शन हियर. व्हेन यू चेक द ऑप्शन, देन इजीली यू आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू. सो एक बार हम लास्ट ऑप्शन से चेक करते हैं. ओके, या ऊपर वाले से भी चेक कर सकते हो आप, बिकॉज ऊपर वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट, राइट? सो अगर आपको इसको बी लिखते हो, देखो बी को अगर आप लिखते हो तो बी के इक्वल तो नहीं है ना बच्चे आउटपुट, सो दैट इज बी इज रॉन्ग हियर. बट अगर आप बी डैश लिखते हो ना इसको, तो आप देखते हैं इसको, देखो बी डैश मतलब बी का अपोजिट होना चाहिए जस्ट, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा बच्चे, ये 1 होगा और ये 0 होगा. देखो बिल्कुल मैच कर रहा है. तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यार. ओके, बिकॉज ए जो होता है ना और ए बार, दैट इज, ये दोनों अपोजिट होते हैं. ए का अपोजिट ए बार होता है, तो बी का अपोजिट बी बार होगा. मतलब 0 का 1 हर 1 का 0. दिस इज नथिंग बट अ ऑपरेशन ऑफ नॉट गेट. ओके, नाउ these are the only one of the question is given to you in the this exercise. So again we are talking about this question. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे, आपको 2 गेट दिए हुए हैं, आपको पूछ रहा है क्या आउटपुट आएगा. ठीक, देखते हैं. सो आपको ये कौन सा नैंड गेट दिया ना, तो ए का क्या होगा बच्चे, ए बार हो जाएगा, और बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा. और ये कौन सा गेट है, दैट इज नॉर गेट. तो नॉर गेट का ऑपरेशन होता है बच्चे ए बार बी बार का होल बार, हो ना, यही होगा दोनों का बार. सो आपको पता है ये वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी होता है बच्चे. ए डॉट बी किसका ऑपरेशन होता है, दैट इज एंड गेट का. तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है. ओके, इजी क्वेश्चन है बहुत. नाउ इन दिस केस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल है स्मॉलेस्ट रेसिस्टिविटी. बच्चे रेसिस्टिविटी पूछ रहा है आपसे, तो आप समझो रेसिस्टिविटी क्या होता है. रेसिस्टिविटी इज, दैट इज रो, दैट इज रिप्रेजेंट विद रो. तो रो ऑफ, वी कैन से दैट, पहले आप कंडक्टिविटी समझो. कंडक्टिविटी इज हाउ मच, दैट इज सिग्मा. तो सिग्मा ऑफ, वी नो दैट दैट इज सिल्वर इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ एल्युमिनियम. ये होता है बच्चे. तो रेसिस्टिविटी वैल्यू उल्टा होता है. तो सिग्मा ऑफ दिस, दैट इज रो ऑफ, दैट इज गोल्ड, रो ऑफ कॉपर एंड दैट इज रो ऑफ सिल्वर. These are the opposite. Okay, so among this given option, silver is given option, so we are putting the silver is the lowest, smallest value. But in the case of this, you know about this also, germanium, glass and silicon. If you know about the periodic table, so in this periodic table we know about that semiconductor element having valence electron, that is 4. तो ये कौन सा ग्रुप होते बच्चे, ये एक्चुअली में होते बच्चे, दैट इज वी कैन टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप इज, दैट इज कार्बन फैमिली ग्रुप. ओके, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 3 होता है और जिसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन दैट इज 5 होता है. ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली होते हैं बच्चे, ये बोरॉन फैमिली होते हैं. तो ये कौन सा एलिमेंट है देखो. सो ये होता है कार्बन फैमिली ग्रुप, क्या होता है, पीबी, राइट. ये हो गया बच्चे. नाइट्रोजन क्या होता है, दैट इज, this is nitrogen family group. So these are the group which are used here to see this. Germanium are the pure semiconductor element. Okay, so आप इसको ये ले सकते हो बिकॉज इसका कंडक्टिविटी लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में. सिलिकॉन का भी सेम है, और ग्लास है परफेक्टली इंसुलेटर मटेरियल. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस द सिल्वर इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ अब देखो यही पॉइंट यहाँ बोल रहा है आपको कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज. तो आपको पता होगा बच्चे सेमीकंडक्टर जो है ना,
सेमीकंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज इंट्रिंसिक और एक होता है बच्चे एक्सट्रिंसिक, है ना। तो इंट्रिंसिक वाले पार्ट जो है ना वो प्योर फॉर्म होता है, मतलब माइनस करके आप लेके आते हैं वही वाला प्योर फॉर्म होता है ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं बच्चे, ठीक। बट एक्सट्रिंसिक ना दो तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होता है बच्चे? इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी, ओके, ये एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक में बोलते हैं दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एक होता है बच्चे एन टाइप, ओके। So P and N type, two type of, we can say that structure are there. So in this case when we talking about P and N type, so अब बताओ P type में क्या करते हैं हम लोग बच्चे? That is trivalent impurity. This P type, this is a P type, इसको P लिखते हैं, P type और N type, ठीक है। P type में हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब जिसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे अभी हमने बताया ना आपको, ये बोरोन फैमिली ग्रुप वाले सारे एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। और पेंटावेलेंट में ये वाले ग्रुप होंगे सब, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? बोरोन, ये सारे ग्रुप इसमें ऐड होंगे, ठीक है। और एन टाइप में क्या ऐड होता है बच्चे? एन टाइप में होता है हमारे पास दैट इज पेंटावेलेंट, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप, ठीक है, सारे होंगे। तो आप देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द ऑब्टेन द जर्मेनियम इज डॉप्ड विद। तो जर्मेनियम किसके? जर्मेनियम क्या है बच्चे? प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ओके। तो किसके साथ होगा? ये बोरोन के साथ हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है।